Hello viewers, this is your brother Sandi here, Liberal candidate for Brindabella. Guys, I'm here seeking your support for these upcoming elections and give your brother Sandi a chance. Keep on watching and listening Radio Manpasand Tarka Lagake. थैंक यू। यहाँ डोनेशन की बात कर रहे हैं तो एक हमारे साथ मेरे साथ एक इंसान बैठे हैं जो अपनी जिंदगी डोनेट कर रहे हैं समाज के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, और बहुत कुछ इनके अंदर एक जुनून और कीड़ा भरा पड़ा है कि कुछ दुनिया को बदल देना है, देश को बदल देना है, कैनबरा को बदल देना है, असेंबली में आना है और फिर उसके बाद तो जन जागरण करना है, जो इनका डायलॉग है। वेलकम करता हूं मैं हमारे संदीपन मित्रा जी, जिनको प्यार से हम सैंडी भाई बुलाते हैं। सैंडी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो मनपसंद के इस कार्यक्रम में। आप तो हमेशा रेडियो मनपसंद आते रहते हैं, लेकिन आज बड़े नए रूप में, नए ढंग में और नए अवतार में आप आए हैं। स्वागत है। वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष जी। थैंक यू ऑलवेज। आप जिस तरह से इस कम्युनिटी का एडवोकेसी आप कर रहे हो सर, and especially when it comes to supporting all aspirant advocate like us who wants to do something for the community, really appreciate. आज तो तड़का लगा के आए हुए और जन जागरण आपसे कौन ज्यादा सीख सकता है भाई? नहीं, यू आर ए लीड बाय एग्जांपल। चलिए, वी आर एब्सोल्युटली फेसबुक लाइव। मेरे साथ हैं सैंडी मित्रा, ही इज द लिबरल कैंडिडेट फॉर ब्रिंडाबेला इन द अपकमिंग इलेक्शंस। एसीटी में इलेक्शंस हो रहे हैं दोस्तों, याद रखिए सैटरडे 19 अक्टूबर 2024 को ही है। कैसा लग रहा है? पहले बहुत एक्साइटिंग, इट्स क्वाइट एक्साइटिंग मनीष जी। आई थिंक probably as a first timer, I think this is giving a lot of opportunity at the moment to understand the real requirement for the communities. So before, while I was in the community service journey, it was a very different approach, different outlook. Lots of gatherings and experience I got during that time, but at the moment I think this is the real problems, and I think मुझे ये politics एक नई रास्ता दिखा रहा है that how we can now become the voice for the community to address the real issues, the pressing issues which touches us on everyday life on the real face. मैं कैनबरा में have been living here for last 18 years. My journey has started from a very humble beginning, from a very rural part of India, and I have chosen, and I'm very touched with that Australia. I've chosen Canberra as my home. I've chosen Australia as my homeland. A very humble family man, a father, husband of a very, very supportive wife, and also a father of an adopted son. I'm a big dog lover. I've got a dog. So a Goldie. Yeah, Goldie. गोल्ड मेडल मिल गया ओलंपिक्स। I think gold medal, I call that as a selfless love which I get from my dog. Okay. So rather my son. And I think probably apart from being a community, like being a politician, I have a long story of supporting the community and serving the community. So my previous role tha, I was working as an advisor for the shadow minister of city service, Nicole Loda. तो assembly का किस तरह से run होता है, as an MLA, I've got the full hands-on experience of that as well. So it was really good. But now, it's the time for the battle. So all in the battlefield. क्या बात है, कूद पड़े आप 100%। और ये पूरी अपनी फैन फॉलोइंग लेकर आए। देखिए हमारे साथ है, कौन है बताइए? अंकुर जौहरी एंड अभिनव श्रीवास्तव। ये हमारी सोच है भाई, ये है तो हम है। अच्छा तो आपने दोनों दिमाग लेके चल रहे हैं। दे आर द ब्रेन। ब्रह्म हम बोलते हैं इसको, तीन दिमाग वाला। अगर आप सैंडी भाई को जानते हो तो बहुत ही हेल्पफुल है ये हर काम में, मतलब आगे। अच्छा, सोसाइटी में चेंज के लिए जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद वो होना चाहिए था, वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, क्योंकि ये मेरे इतने करीब हैं, इतने अच्छे मित्र हैं मेरे, और जिस हिसाब से इन्होंने एक जन जागरण जैसे आपने किया हुआ है, तो मोटिवेटिंग तो है ही,
और मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि सैंडी भाई को एक बार जरूर मौका दे और बात करें उनसे। बिल्कुल लाइव इतनी इतनी दुआएं मिल रही है सबसे। मनीष जी, आप जिस तरह से हम सब लोगों को सपोर्ट करते हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स है इस बार, ऑफ आवर कम्युनिटी इज मेकिंग आवर नेशन प्राइड एज वेल. So, followers and viewers, we are looking for your support, especially for this election. Please be the change to make a change. Canberra, it's getting very crucial now to give the best for our Canberra, which has been pending for a long, long, long time. So, stay alive. वाह, वेल सेड. चलिए, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. जी हाँ, आई हैव ऑलवेज सीन यू एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ कैनबरा, और सभी ने देखा है आपने बहुत सारे काम किए हैं. आपने दिवाली मेला, होली मेला, वेरियस इवेंट्स को आपने कल्चरल इवेंट्स किए हैं. एंड तो और आपने क्या क्या, और इसमें क्या क्या काम किया है, प्लस कम्युनिटी के लिए आपने और क्या काम किए हैं इतने साल से, कितने साल से आप लगे हुए? भाई, आपकी तरह तड़का लगा के लगे हुए हैं. 10 साल हो गया ऑलमोस्ट. या 10 years. So apart from being that opportunity of serving my motherland and homeland, which is India and Australia together, I think I've done various things. I don't know, during the time of COVID, big support with all these brothers, surrounded with me. We have done a lot of food donations. We raised fund for the Pain Australia. We have done things for the homeless people. I mean, I can't remember countless. और सबसे बड़ी चीज है कि मनीष भाई, with the blessings of everyone, I think you have also been an award winner. I was also blessed with the ACT Multicultural Champion of the Year award in 2021. So it's not like I've just joined the politics. So because in politics, the basics what we need is, have you got any first-hand, real life experience of knowing the serving for the people, and that is what probably I have the experience for 10 years. It's my passion. तो ये पैशन कब इलेक्शन में बढ़ गया, मतलब when you thought, कब अंदर आपके अंदर जुनून कीड़ा जागा कि यार मुझे कम्युनिटी में तो कर लिया, अब मुझे असेंबली में जाके और कुछ करना है, तो ये कब जागा और क्यों जागा? अच्छा, very interesting question. I have never been asked about that. Okay, let me tell you. I'll just tell you a story. Okay, just a story. Now, once upon a time, in a jungle, there was a big fire. It was just spreading around everywhere. Okay, so now there is a little sparrow, which was just standing on a branch, and that little sparrow was thinking, what's going on? And then, what she did, that little sparrow, she just jumped in the little pond, took some water on her beak, and, just going to stop the fire so that at least she can drop to stop the fire. Now, the thing is that, there's a monkey sitting on the top, and the monkey asked the sparrow, are you crazy? Do you think you can stop that fire with your little beak? The sparrow said, no, I'm not. But at least, you know what? I can try to set that fire off, because tomorrow, when that fire will be set off, I know my name will be there in the history. Manish bhai, Canberra, at the moment, our territory, the beautiful nation, the capital city of this nation is on fire. It is on fire with the cost of living crisis. It is on fire, with the health crisis. It is on fire on, everyday people's life. We are struggling. Okay, housing, everywhere there is crisis. Now, I, being one among us, is feeling that fire. So I'm just trying to be that sparrow, and I'm standing up at the moment that if not this time, it will be too late for our Canberrans. And that is what has aspect in the politics, because I've suffered, I'm suffering, and I know I will suffer in future if we leave it for too long. तो आपके अंदर एक आग जल गई है, ज्वाला जगी है. Yes. एक वोल्केनो फटा है कि Yes. कैनबरा में बहुत कुछ हो रहा है जिसको आप बदल सकते हैं. तो क्या प्लान है आपका? What do you plan to do? First thing is that, that my dad always tells me that, son, if you want to make the change, be the change. So here is the change, Sandy.
Second thing is basically, you know what, if with all of your blessings, if Canberrans gives Canberra Liberal a chance, we have dealt with this government for 20 years, just one term at least they can give a chance to an experienced progressive approach. Then the first thing what we'll do is, you know, if you watch into our policies and look into the policies, every policies, you know, our leader is, or our party has declared so far, is all to stand with the people, be it cost of living, be it, you know, probably easy transport convenience, and, you know, there are multiple of policies which have declared. So first thing is that reduce the pressure, you know, with our $65 million value of the cost of living package back to the community. So what we'll be doing is basically not to go and stay in the cave and bring things, okay? The first thing what we'll do is just stand with the people and let's fix the basics. That's all we're trying to do. And that's all I'll be standing for my Brindabella, for my Tuggeranong. You know, like at the, jab hum subah ko neend se uthte hai, sir, you know, we push ourselves so hard every day, and I'm getting older now. You know, 20 years I have slogged myself in this beautiful state, but I'm just moving in the circle. You know, every quarter the rates are going up higher. Okay, so all our hard-earned taxpayers' money are getting wasted, and that is our money. The rates are going higher. We are, you know, probably coming up with the policies that we are going to put a cap on the rates, okay, of 2.2%. There is a lot. So not only cost of living, basic city services, right? Especially in the Tuggeranong, Manishji, I felt, I've been a Chisholm resident for 18 years, I felt that we are not a part of Canberra. We have always been outskirted. रास्ते पे चल रहे सर, ठोकर खा गया, टंगड़ी टूट गया. Okay? Big trees, you know, they're just hanging, you're putting up with the fix my street, and they're like, no, we can't do anything. I don't know, I think there is a lot more love for the tree in this state than normal human beings' life, right? So, and then uske baad, you know, basics I'm talking about, and then one fine morning a trunk broken down, or you have damaged your car, all right? So, basics is something which will be my main interest area. I want to stand by my Tuggeranong people and stand along to each and every household and tell them, let's come back to the basics. Let's fix our cracked footpaths. Let's fix our potholes. Let's fix our, you know, safer community, bhai. Trespassing इतनी बढ़ती जा रही है Tuggeranong side पे, रात को सो रहे हैं, hooning, wake me up 3 times at the middle of the night, okay? This state is getting, they're making the laws here, you know, which is bad, not only for us, bad laws, complete bad laws. Not only bad for us, but for the future generations of our children. So, there is so much of the things which I have got a big dream for, and we'll start with the basics first, fix the problem of people. ये तो देखा है कि I think Tuggeranong was used to be the Nappy Valley. इस जमाने में जब हम 30 साल पहले आए थे, उसके बाद गंगालिन पे ज्यादा फोकस हो गया, and Manish ji, $7 million, $6 million, I'll not name it, for a park to fix in the other side of the Canberra. After a year, they have decided, oops, we have to put the toilet in. They're injecting another $1 million to fix a toilet. $7 million, our hard-earned taxpayers' money. Okay? When it comes to the Tuggeranong, local playground, भाई swing इस तरह से हिल रहा है 20 साल से, बच्चा जाके बैठा गिर गया. Why there is not enough love for that city? That is my biggest question. Are we not a part of Canberra? So, definitely. चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और बहुत सारी बातें हैं और सैंडी से बात हो रही है. चलिए, आप लोगों को कुछ कहना हो या कुछ क्वेश्चन पूछना हो जी हाँ सैंडी मित्रा से. He has been part of our community. Good question. आपके मनपसंद गीत सुनते हैं, किशोर कुमार की हम बातें कर रहे हैं, तो आपका एक मनपसंद गीत है मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह. क्या बात है भाई, यार माइंड रीडर था. अब आजकल मन भी पढ़ने लगे हो सर, क्या बात है. लेकिन हमारी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी, हमारी देसी कम्युनिटी या सब कॉन्टिनेंटल कम्युनिटी कहती है हमारे लिए क्या, सैंडी भाई हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, क्यों हम वोट दें. अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मनीष भाई. बट लोग भाई देखिए, आई मीन सबसे बड़ी जो बात है ना कि, एंड आई विल नॉट ब्रैग अराउंड, ओके, आई नो that, you know, the Labour and Green government has promised lots of stuff for the multicultural community, right? Definitely, I can assure you that if we build the government,
we will first of all deliver those broken promises. I'll not go into much detail. To me, sir, I find that multicultural community, we don't want to divide this like, we are multicultural or I'm Indian or, we are a beautiful, we live in one of the most multicultural fabric society, which is our Canberra. So we are an inclusive community. Our biggest goal under the Liberal policies is basically whatever the Labor has promised, be it the epic. We're not going into much details, right? You don't want to make this a very complicated conversation. However, we will try to deliver all the broken promises. Liberal candidate, as you can see, we are always very close with the multicultural community because three candidates of us, including a Senate candidate and the second Senate candidate as well, is a multicultural from the multicultural diverse background. Our leader, Elizabeth Lee, is from the multicultural background. So that just reflects to the wider community that what we can do for the multicultural community. And guys, if you can see that all throughout the time, whenever there is any multicultural event happened, we are always there. We are always there. So that just shows a reflection that what we're going to do for the multicultural community. But at the moment, let us know, please let us know that what are your issues, okay? If racism is an issue, yes, or anything like that is an issue, yes, I faced that. I'm one among you. Definitely, there are processes in places, okay? So what are your issues? And we'll definitely give our level best to give for the multicultural community. Where you get the fund? Do you have to generate your own? The party supports you? भाई तीसरी से when a boon से क्या है? I had this plan, probably for last 2 years कि मुझे try करना है every week $50, $25, something like that. So I have generated all my fund. Few of the very close friends, came up with whatever capacity they got, and they're all hard earning working people, I know how hard it is at this moment, but they have all came and they trusted me. So it was mostly myself and 2 or 3 of my friends just shown that courage. Lovely. And आपसे बस पूछेंगे कि क्या चांसेस हैं आपके विन करने के, लेकिन उससे पहले आपको एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. आपने बड़ा अच्छा गीत और फिर हमको बताया कि जो लेबर पार्टी की आप बात कर प्रोमिसेस तोड़ी हैं, एग्रीज तोड़ी हैं. तो गाना एक किशोर कुमार का है, उत्तम कुमार पे शायद फिल्माया गया है और आपके मनपसंद गीत है कि दिल ऐसा. आप गा दीजिए अपनी आवाज में. श्रोता लोग भाग जाएगा यार, बहुत पका लिया. नहीं आप अपनी आवाज गुनगुनाते तो होंगे कभी ना कभी, महफिल में गाते होंगे. चलिए, जितने इंप्रेशन बनाया सब डिप्रेशन हो जाएगा भाई. एंड्रू बार को और उनकी पूरी पार्टी को, साथ में शेन रिटेनबरी उनकी पार्टी को, सैंडी की तरफ से. तो अगर वो सुन रहे हैं, एंड्रू बार एंड शेन रिटेनबरी एंड योर एमएलएस लेबर, तो ये प्लीज गीत सुनिए और सैंडी को फोन लगाइए कि इनका दिल क्यों तोड़ा आपने. और दिल टूटता है तो वो घायल जो शेर होता है ना, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है. जख्मी शेर. लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि एक मल्टीकल्चरल कम्युनिटी का कैंडिडेट होना ही चाहिए. आपको लोग क्यों वोट दें? ब्रिंडाबेला वाले जो जितने भी सुन रहे हैं, और स्पेशली कितना टफ होगा, बिकॉज ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं, उनके साथ लड़ना और फिर प्रेफरेंशियल वोटिंग जो है उसमें आप बताइए क्या कहना है आपका? सर, मुझे I think what I'm finding very interesting about this game is basically why people should vote for me. I think I'm one among you. I face the life firsthand, all the problems and everything, and I'm here. Let's forget about the politics. Let's forget about our opinion. But I'm here for our basics. And that is what I find that, people are giving me that assurance that Sandy, I think we can see a genuine man whom we can trust on and will vote for you because you have got the solutions of what you are going to do. Am I going to do that or not? Let us go in there. Let's see what collateral damage has happened. Let's find out the books and let's see what can we do. But we have already declared all our policies, which is all about you people.
For me, what I'm finding that, when I'm going for mostly shopping center or door knocking or talking to people like you, I think I can understand your problems. I can understand how hard it is when you wake up in the morning, go for those, hard work, and then all your rates are getting vested on so many things, and that is how we're going to release the cost of living package. So I can hear you, I can feel you. Whenever there is any problem, मनीष भाई, लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, जैसे मीनस कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, straight away when I go home, my first job is basically I write the letter to the authority and I'm getting response. कॉलवेल पे बहुत बड़ा एक ड्रामा हुआ था विद द कॉलवेल शॉपिंग सेंटर, 10 years nothing took place. I went through literally, मनीष भाई, शाम को 7 बजे ठंड में घर घर डोर नॉक करके I raised petition. I said that this is the thing, which has been happening. Wearing out our own down suburbs and shops, this is what is the reality. Can you help? Manish ji, एक हफ्ते में 500 people has signed up the petition, and then it was raised up in the assembly. Problem started getting fixed. So I'm one among you, and I will hear you, and I will connect with you, and that is what I'm finding that people are voting. I'm requesting your support. Hard, yes, it is a really hard job, but my dad always keeps on telling me that, son, don't make someone's opinion about you to be the reality of your life. Yes, it is hard, but your Sandy brother doesn't care. I will be there for you and I'll give my best shot. Well said. Thank you, Sandy bhai. Thank you. Thank you for your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा अच्छा लगा, and आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं. Thank you. और I'm sure मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ, मैं the best person win, best man win और best party win, लेकिन शिद्दत करती रहनी चाहिए. जैसे ओलंपिक्स चल रहे हैं, मेडल की विनिंग के लिए हम सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी लगे रहिए. एंड हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. थैंक यू मनीष भाई. और हम चाहेंगे कि आप आइए, एंड फिर आपसे 19 अक्टूबर के बाद नए अवतार में आपको यहाँ मिलेंगे. आई थिंक नया अवतार अभी आपको आ रहा है मनीष भाई. आप कब आ रहे हो पॉलिटिक्स में? अभी माय क्वेश्चन टू यू. क्यों पॉलिटिक्स दूर रखिए हमको पॉलिटिक्स से. हम समाज सेवक हैं. आप तो तड़का इतना लगाते हो भाई, अभी तो तड़के पे तड़का लग जाएगी जब मनीष भाई आ जाएगा. पूरा गठबंधन हो जाएगा अपोजिशन का. जस्ट फॉर यू हम आपके साथ रहेंगे भाई. आ जाइए पॉलिटिक्स में. थैंक यू. भगवान आप प्यार आशीर्वाद मिलता रहे आप लोगों से, ऊपर वाले से, बस यही काफी है मेरे लिए. थैंक यू. एंड मेरे साथ जो इनके करीबी मित्र हैं, अभिनव, फैन फॉलोअर्स हैं, अभिनव एंड अंकुर. डू यू वांट टू से समथिंग? देखिए, तो हमारा यही कहना है कि उधर चला गया. आप बोलिए. हम लोग चूँकि हम लोग टगरनोंग में रहते हैं और इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं टगरनोंग को बहुत बुरा तरह ट्रीट किया गया है. हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गंगालीन को आप बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहे हो. ट्रीट करो, वहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, पर एट द सेम टाइम हमें हमारा ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए. हमारे पास बसेस नहीं है सिटी जाने के लिए, हमारे रोड्स में पटहोल्स हैं, शॉपिंग सेंटर फिक्स नहीं है. तो ऑल दिस थिंग्स सैंडी भाई इतने सालों से रह रहे हैं, वो देख रहे हैं. आईएसी में रह के हमने कितने सारे जन जागरण किए हैं. सैंडी भाई के वर्ड्स में हमने कितने सारे सोशल वर्क किए और हमने रियलाइज़ किया, सैंडी भाई ने रियलाइज़ किया कि वो टाइम आ गया है कि हम उनको ज्वाइन करना पड़ेगा पॉलिटिक्स टू फिक्स दिस. बिकॉज हम लोग एक सोशल लेवल पे एक लेवल तक ही काम कर सकते हैं, एक लेवल तक ही लोग को सपोर्ट कर सकते हैं. इफ़ यू रियली वांट टू डू ए चेंज देन ही हैज़ टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स. सो वी आर विथ हिम. वी वांट दिस चेंज टू हैपन बिकॉज 20 ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम एंड इज़ लॉन्ग ड्यू कि हमें फिक्स होना चाहिए. टगरनोंग में चीज़ें फिक्स होनी चाहिए, फैसिलिटी हमें भी मिलनी चाहिए. बिकॉज हम भी वही टैक्स पे कर रहे हैं, हम भी वही रेट पे कर रहे हैं जो गंगालीन के साइड के लोग पे कर रहे हैं. और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट देम. हम उनको कुछ नहीं बोल रहे, पर हम लोग बोल रहे हैं कि हमें भी हमारा ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमारा ड्यू कंट्रीब्यूशन हमारे साइड भी मिलना चाहिए, हमें भी वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए. बिल्कुल. मैं अभिनव भाई से बिल्कुल सहमत हूँ. और इसके लिए उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो सेशन है, जो आधे पौन घंटे का, 1 घंटे का जो सेशन जा रहा है, ये मुझे लगता है कि सैंडी भाई को जानने के लिए शायद पूरा नहीं है. क्योंकि
जैसे मैं इनको पहचानता हूँ, जो 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 इनसे मेरा इंटरेक्शन अभी होना शुरू हुआ इसके दौरान, पिछले 3 4 6 महीने में, इनका जो विजन है, it's like not only for next 4 years but another 20 years he has plans for Brindabella people, which has been really amazing, and I know the party really supports them. पार्टी लिबरल पार्टी भी उस उनके प्लान्स पे ही इनके प्लान्स बने हुए हैं, विजन उनका उसी पे है। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे जो अभी जैसे आपने ही बोला कि ये हमेशा वीकेंड पे मॉल्स में इनसे मिल सकते हैं, मैं चाहूंगा कि लोग उस अपॉर्चुनिटी को एक बार जरूर अवेल करें कि अगर सैंडी भाई इनको किसी मॉल में या पार्टी में मिल रहे हैं या कहीं पे बाहर मिल रहे हैं, तो उनसे जाके बात करें, इनको इनको देखें, इनको इनसे बात करके जो आपको लगेगा कि इनकी जो विजन जो चेंज करने का है ब्रिंडाबेला को। अभिनव भाई ने अभी इतनी सारी चीजें गिनाई कि जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा लोग उससे गुजर रहे हैं, जैसे टैक्सेस हो गए और बढ़ती हुई कीमतें हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, एक नहीं 50 चीजें हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो विजन जो लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, ब्रिंडाबेला कम्युनिटी के लिए, उनके बच्चों के लिए, वहाँ के स्कूलों के लिए जो है, दैट इज़ रियली अमेजिंग। मैं चाहूँगा कि लोग उनसे बात करें, उनको समझें और उन्हें अपना वोट भी दें। प्लीज़ डू वोट on 19th, do donate as well. I support this donate line. So please do that. Thank you so much, guys. Thank you, Manish ji.